Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Nabila from Army Public School 4 Dots, Class 6, your geography teacher. This is our 6th week from our online support group program, and this video is your lecture number 4 from your second chapter, The Natural Spheres of the Earth. Before starting a new topic, let's discuss our previous 3 videos, what we learned or discussed in our previous 3 videos of this chapter. In the first video of this chapter, we discussed about the natural spheres of the earth. There are 4 spheres of the earth. The first one is atmosphere, which consists of air. The second is lithosphere, which consists on land. Third is hydrosphere, which consists of water, and the last one is biosphere, which consists on living things. The second video of this chapter was the composition and structure of the atmosphere, which is from the textbook page number 26 to 29, in which we discussed the temperature, air pressure, atmospheric moisture, and composition of the air in the lowest layer of Earth's atmosphere. And the third video was on the global wind system. So there was the global wind system have planetary winds and seasonal winds on a larger scale, and on a smaller scale our global wind system has local winds. We discussed all 3 topics in our videos. So let's move to this topic. Before starting a new lesson, I want to ask you some questions. So what do you see when you look up in the sky? Yes, we can see sun. But what is the white fluffy looking things we see in the sky? They are clouds. So our today's topic is from the atmosphere. So how is the moisture present in the atmosphere? Our third lecture was on this topic. We discussed some of the points in our third topic, which was the atmospheric moisture from the textbook page number 29, in which we discussed about the atmospheric moisture refers to the amount of water vapor in the atmosphere. हमने पढ़ा था थर्ड वीडियो में कि एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है कि हवा में हमारी जो नमी होती है वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर के अलावा वो कौन सी 3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी हवा में जो नमी होती है वो मौजूद होती है. Okay, let's start today's topic. How is moisture present in the atmosphere? So, atmospheric moisture can exist in many forms, including rain, clouds, hail, snowfall, and fog. The first we will discuss are the clouds. I told you what are the clouds. Clouds are the fluffy looking things that appear on the sky. The clouds are the visible masses of small water droplets or ice particles which are suspended in the sky. They appear in different shapes and sizes. So clouds होते हैं वो पानी के ड्रॉप्स की या आइस के पार्टिकल्स के विजिबल मैसेज होते हैं जिसमें बहुत बड़े अमाउंट होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. हर डिफरेंट उनको टाइप्स हमने उनको डिवाइड किया हुआ है. तो सम आर वेरी ह्यूज एंड बिग एंड स्मॉल, सम आर वेरी स्मॉल. So they are appear in different shapes and sizes. So in this topic we will discuss 4 different types of clouds. The first one is cumulus clouds. Second one is cumulonimbus clouds. Third is cirrus clouds and stratus clouds. So here we have the scale from the earth, from the ground level to the highest, from the altitude to the sky. So starting from the last one, which is the stratus cloud. Stratus clouds are from the earth to 6,000 feet to the sky. They are on this scale.
They are on this from the ground to 6,000 feet, and the cycle is cirrus clouds. They are above 18,000 feet in the sky. Cumulonimbus clouds are in this scale too, which is from 6,000 feet, and the last is cirrus cloud. We are on from 18,000 feet. So what are the cumulus clouds? Why we call these clouds cumulus clouds? So because these clouds are very fluffy and white. They could have flat bases that puff upwards like cotton. They form low in the sky and bring short and heavy showers. They are called cumulus clouds. They are appear like a cotton in the sky, and they bring short and heavy showers. The second is cumulonimbus clouds. Strong uplifts may cause cumulonimbus clouds to form. These clouds can grow very tall and bring heavy rain. Often come with thunder, lightning, and strong winds. So these clouds bring very heavy rain, but with thunder, lightning, and strong winds. Have you ever experienced these types of clouds? The third type is cirrus clouds. Cirrus clouds is usually formed at very high altitude. They are where the air is cold and strong winds blow. They are thin and wispy clouds. Wispy means like they are like a smoke. यानी कि आसमान में ये बिखरे होते हैं दूर दूर, और विस्पी यानी कि धुएं की तरह दिखते हैं, लाइक स्मोक की तरह आसमान पे आपको दिखेंगे. सो दे आर फॉर्म एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. ये बादलों की टाइप कहाँ बनती है? आसमान पे बहुत बुलंदी पर बनती है. वेयर द एयर इज कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जहाँ हवा बहुत तेज और ठंडी हवा होती है. दे आर वेरी थिन एंड विस्पी क्लाउड्स. The last one is stratus clouds. Stratus clouds are shapeless clouds. They don't have any shape. They often give long periods of rain, and they are formed at low altitude and in calm weather. Have you ever experienced these clouds in Karachi? Okay. The atmospheric moisture can exist in the form of fog too. Basically, fog is a low cloud that is close to the ground level or in the contact with it. Fog is usually formed when temperatures are less than 2.5 degrees Celsius and when the air is saturated. When the air cannot hold more water vapor condenses to form water droplets and फॉग. तो फॉग आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड. फॉग यानी कि धुंध. हमें सर्दियों के मौसम में हम एक्सपीरियंस करते हैं धुंध को. तो धुंध जो है मीन्स फॉग इज अ टाइप ऑफ फॉग, सॉरी टाइप ऑफ क्लाउड टू. ये भी बादल की किस्म है. जिस तरह से आपको मैंने पीछे बताया क्यूमुलस, साइरस एंड स्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं ये डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट लेवल पे भी आसमान पे मौजूद होते हैं. ठीक है. तो फॉग जो है ये ज़मीन के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं, बिल्कुल ज़मीन के लेवल पर होती है. बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए वो बादल होते हैं जो कि बहुत ज़मीन के पास आ जाते हैं. तो इट इज़ यूजली फॉर्म व्हेन टेम्परेचर इज़ लेस देन 2.5 डिग्री सेल्सियस. ये कब बनते हैं? जब ज़मीन का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लाइक 2.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जब हवा में मज़ीद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जो कंडीशन होती है वो नहीं होती. तो व्हेन द एयर कैन नॉट होल्ड मोर वाटर वेपर, जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वो मज़ीद वाटर वेपर्स को कंडेंस नहीं कर सकता, तो उसको अपने ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो वो पानी जो होता है वो फॉग और फॉग यानी धुंध और पानी के ड्रॉप्स की सूरत में ज़मीन पर जा जाता है. अक्सर हम जब सर्दियों में सुबह उठते हैं तो वी कैन सी सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन आवर प्लांट्स, ऑन द लीव्स ऑफ आवर प्लांट्स और इन द अर्थ टू. तो हमें ये लगता है कि मे बी कि बारिश हुई है, बट इट वॉज नॉट अ रेन. बारिश नहीं होती बल्कि those are droplets of water. The last one is precipitation. What is precipitation? This is a new topic. The precipitation is a process whereby the water falls back on the earth's surface. जब evaporation होती है, evaporation में हमारा पानी जो है वो तमाम
एवोपरेट होकर, समंदरों का पानी सूरज की गर्मी की वजह से एवोपरेट होकर आसमान में चला जाता है, तो प्रेसिपिटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि ज़मीन से गया हुआ पानी दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाता है. The type of precipitation that falls depends on the air temperature. अब precipitation किस फॉर्म में हमारे पास ज़मीन पर, यानी कि वो पानी जो हमारे पास ज़मीन में वापस आ रहे हैं कि वो बारिश की सूरत में आ रहे हैं, ओलो की शेप में आ रहे हैं, या फिर बर्फबारी की शेप में. ठीक है, तो these type of precipitation that falls depends on the air temperature. Air temperature पे वो depend करता है. तो when the water droplets in the clouds combine to form larger droplets and become too heavy, these droplets fall as precipitation. So if the air temperature is below the freezing point of the water, the droplets fall as snow or hail. अगर हमारे एरिया में जो एयर है उसका टेम्परेचर लेस इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हमारे वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, तो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे जो हमारी आसमान में बादल होंगे वो या तो स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी की शक्ल में गिरेगा पानी, या फिर वो हेल यानी कि या तो हेल की शेप में गिरेगा या फिर हमारे पास ओलो की शेप में. These are called hail. Okay, और if the air temperature is above the freezing point, अगर air temperature freezing point से above है, अगर नीचे है, या तो वो स्नोफॉल की शेप में गिरेगा या फिर हेल की शेप में. और अगर एयर टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से अबव है, लाइक 6 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 6 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स आएंगे दोज आर इन द फॉर्म ऑफ रेन. I can explain you in the example that in the southern part of Pakistan the precipitation is in the form of rain. कि हमारे जो शुमाली इलाके हैं, तो हमारे साउदर्न इलाके हैं, जैसे कि आप कराची इस तरफ के इलाकों को देखें, तो यहाँ पे जो precipitation होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? बारिश की शक्ल में. बट इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के शुमाली और माउंटेनियस एरियाज हैं, वहाँ पे precipitation होती है स्नोफॉल और हेल की शेप में. I hope you all are understanding the topic. If you have any questions, you can ask me. And here is the homework from the very first video of this chapter to the last video, which is this video. And the first work is make a lesson title on your notebook of this chapter. Then answer the questions. The first question was from the first video, which was that find the 4 spheres of the earth. Second question is from your second video, which is make a diagram to show the composition of air in the lowest layer of the earth's atmosphere. And third question is also from your second video, explain how temperature affects air pressure and atmospheric moisture. Fourth question is from your third video, which is explain the factor that is most important in driving the global wind system. And question number 4 is also from the video number 3, draw a diagram to explain the land and sea breezes. Question number 6 and 7 are from the fourth video, which is this video. Arrange the types of clouds according to their altitude in increasing order: cirrus, cumulus, and fog. And question number 7 is match the following natural spheres to their conditions. Do matching on your textbook page number 35. And students, send me all your homework of chapter number 1, the universe, and chapter number 2, the natural spheres of the earth, so I can mark your attendance. Some of you are not sending me your homework. Kindly do your work on time and send us. Thank you, students. Stay safe, stay home.